हमारा मदरसा फिर से बन जाए। और आज कहाँ से आई थी पता? एक का नाम हाजी शेख जलालुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह, दूसरे बुजुर्ग का नाम ഡൽഹിയിലെ ഏറെ തിരക്കേറിയ മെഹ്റൊളി നഗരം. ലോധി വാസ്തുവിദ്യ തലയെടുപ്പോടെ നിൽക്കുന്ന ഭൂൽബുലയെ കരികിലൂടെ ദേസു റോഡിലൂടെ നടന്നാൽ മെഹ്റൊളി ഈദ്ഗാഹിലേക്ക് പോകാം. 1 കിലോമീറ്ററിൽ താഴെ മാത്രമേ ദൂരം വരൂ. അവിടെ നഗരം അവസാനിച്ച് സഞ്ജയ് വൻ തുടങ്ങുകയായി. സഞ്ജയ് വനം മെഹ്റൊളിക്കും വസന്ത് കുഞ്ചിനുമിടക്കുള്ള ഡൽഹിയിലെ നഗരവനം. തലസ്ഥാനത്തെ നഗരത്തിന്റെ തിരക്കുകളൊന്നുമേൽക്കാതെ തണുപ്പും ചൂടും മാറി മാറി വരുന്ന ഡൽഹിയുടെ കാലാവസ്ഥക്കൊപ്പം പച്ചപിടിച്ചും ഇലപൊടിച്ചും നിൽക്കുന്ന സഞ്ജയ് വനത്തിന്റെ അരികുപറ്റിയാണ് മെഹ്റൊളി ഈദ്ഗാഹുള്ളത്. ഈദ്ഗാഹിന്റെ അറ്റത്തുള്ള കിളിവാതിൽ തുറന്നാൽ ഈ പച്ചപ്പള്ളിയും അഖുഞ്ചി മസ്ജിദ്, 700 വർഷം പഴക്കമുള്ള പള്ളി. അഖുഞ്ചി മസ്ജിദിനോട് ചേർന്ന് ബഹറുൽ ഉലൂം മദ്രസ, ഖബർസ്ഥാൻ, അത്ര തന്നെ പഴക്കമുള്ള ഒരു ദർഗയും. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. मेरा नाम मोहम्मद कुमार है। हम इधर रहते थे। कौन कौन? सैरिन और सिप्पा और मैं और माज और अब्बा और फाइमन और सिप्पा और ये मस्जिद अखूंजी, ये जो सामने आप जो देख रहे हैं, इस कोने से लेके यहाँ तक और पीछे तक ये मस्जिद 700-800 साल पुरानी मस्जिद थी, और जिसमें लगभग मैंने इसके बराबर में जो मदरसा था, मदरसा बहरुल उलूम, ये यहाँ 3 चीज़ थी: मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान। यहाँ मदरसे के जो बच्चे थे 25-30 बच्चे थे जो यहाँ तालीम हासिल करते थे, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी। उस साइड में जो है दरगाह शरीफ थी, वो भी जो दरगाह शरीफ बहुत पुरानी थी, 600-700 साल पुरानी दरगाह शरीफ थी, और जिसमें जो 2 बुजुर्गान दिन जो आराम फरमा रहे थे। एक का नाम हाजी शेख जलालुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह, दूसरे बुजुर्ग का नाम था शेख पर्रेखा रहमतुल्लाह अलैह। ഇത് ഡൽഹി വഖഫ് ബോർഡ് അഖുഞ്ചി മസ്ജിദിൽ നിയമിച്ച ഇമാം സാക്കിർ ഹുസൈൻ. അദ്ദേഹവും കുടുംബവും ഈ ദർഗക്ക് തൊട്ടുപിറകിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. ബാക്കി ഇവർ തന്നെ പറയട്ടെ. और आज जो 3 चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया 30 जनवरी 2024 को। तो ये आप जो देख रहे हैं बिल्कुल जो DDA ने पूरा जो ज़मीन दोस्त कर दिया है, मस्जिद भी, मदरसा भी, कब्रिस्तान भी। तो 3 चीज़ों का निशानदेही सब कुछ ख़त्म कर दी, नामो निशान सब ख़त्म कर दिया। सुबह बिल्कुल 4 बजे यहाँ आके रात का अंधेरे में वो सर्दी हो रही थी बड़ी कड़ाके की, और धुंध हो रही थी, उसमें कुछ नहीं दिख रहा था। तो बच्चे हमारे पढ़ने के लिए बैठ ही रहे थे पढ़ने के लिए। तो उस वक्त आए तो काफ़ी तादाद में जो फ़ौज थी, इतनी फ़ौज थी, बेहद फ़ौज थी। तो सब बच्चों को बाहर निकाल दिया। खुले आसमान, सर्दी के मौसम तो बहुत ज़्यादा सर्दी, 30 जनवरी की बात है, तो बहुत कड़ाके की सर्दी हो रही थी। सब बच्चों को बाहर में खुले आसमान के नीचे खड़ा कर दिया। किसी बच्चे के पास चप्पल हैं, किसी के पास जो कपड़े पहने, गर्म पहना, किसी ने नहीं पहना। तो ऐसी स्थिति में सब बच्चों को बाहर खड़ा कर दिया। तो ये भी नहीं सोचा कि बच्चों को भाई सामान निकालने का मौका दे। कोई सामान निकालने का कोई मौका नहीं दिया उन्हें, बस यूँ ही बाहर खुले आसमान के नीचे खड़ा कर लिया, और चारों तरफ से घेराबंदी उन बच्चों की करनी, ताकि बच्चे इधर उधर कहीं जा ना सके। और उन्होंने
अब उनका जो सामान था ना सामान निकालने का मौका दिया। यहाँ तक कि किसी की चप्पल है, कपड़े हैं, बच्चों की जो अपनी बुक्स वगैरह है, बच्चों का अपना निजी सामान था, मदरसा का जो सामान था, खाना पीना, राशन पानी, और बच्चों के जो कपड़े लत्ते बिछाने के जो वो रजाई गद्दे वगैरह, कोई सामान निकालने का मौका नहीं दिया। बस बच्चों को बाहर खड़ा कर उन्होंने अपना डिमोलिशन शुरू कर दिया। ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്നിവിടം. ഡൽഹി മുഴുവൻ തണുത്തുകോച്ചുന്ന ഒരു ജനുവരി 30 വെളുപ്പിന് 5 മണിക്ക് പോലീസും സേനയും 10 ബുൾഡോസറുകളും ഡൽഹി ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേർന്ന് ഒരു ചരിത്രദേശത്തെ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. The Akhunji Masjid is a monument, is a mosque that had been constructed more than 600 years ago. We have evidence of it in the sense of its architecture that speaks of a certain era. And that architecture being used in mosques does not belong to a later era, but belongs to that century. We have evidence of its historicity in terms of carbon dating of the elements that constructed the structure. और ये घर था घर मेरा आपका? जी। ये भी थी, बस एम्बुलेंस और पुलिस आई थी, बस एम्बुलेंस भाग गई थी और अब पुलिस आ गई। वो तोड़ रहे थे और हम वहाँ पर बैठ के खा रहे थे चीज, पानी और पिज्जा। पानी पी रहे थे, पिज्जा ही खा रहे थे। मेरे को पिज्जा गंदा लगता है। यहाँ पर खड़े थे और फिर सर्दियों का मौसम था, बहुत ज़्यादा ठंड थी, सबकी चप्पल यहाँ पर दब गई थी। तो फिर हमने अपनी अपनी चप्पल बच्चों को दी और फिर हम वहाँ यहाँ पर खड़ा कर दिया, क्योंकि वहाँ पर फिर तोड़ फोड़ करने लग गए है ना। फिर यहाँ से हमको वहाँ भेज दिया आशिक अल्लाह में, फिर हमको नहीं पता क्या हुआ वहाँ पर। 700 വർഷങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്ന പള്ളിയും ദർഗയും DDAയുടെ ഭൂമിയിൽ അനധികൃതമായി നിർമ്മിച്ചതാണത്രേ. The Archaeological Survey of India in 1925 published Akhunji Masjid as one of the monuments that existed in Malayali area of Delhi and had a lot of history behind it. It's more than clear that the Akhunji Masjid is a monument which is more than 600 years old, belongs to a certain era, and has been acknowledged to exist as a historical monument in the official annals published by the government of India under Her Majesty's Empire. മുൻകൂർ നോട്ടീസുകൾ ഒന്നുമില്ലാതെ കൊടും തണുപ്പിൽ കോച്ചി വിറച്ചു നിൽക്കുന്ന മദ്രസയിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പുറത്തേക്കിറക്കി കുട്ടികളുടെ വസ്ത്രമോ റേഷനോ പോലും എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ കേറി വന്നങ്ങ് പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു ഡൽഹി പോലീസും ഡൽഹി ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയും. नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया था। देखो जी, अगर नोटिस देते तो वो जो है ऑफिशियली ऑर्डर के हिसाब से 10 बजे के बाद जो है डिमोलिशन होता, तो ये तो रात में 4 बजे करा इन्होंने, तो 4 बजे तो कोई ऑर्डर नहीं होता रात में। In the earlier days, the Waqf board said that this is a Waqf property, and that council was subsequently changed by the government because she was being truthful, honest, and whatever, apparently to protect the interest of the Waqf properties, which were the due interest to be protected. Later on, the Waqf board changed its stance under pressure from the administrator. People do not understand the nature of Waqf. That is why they get into this confusion. Even courts, many of the judges in the courts do not understand the nature of Waqf. Waqf simply means any piece of property, private or public, that had been marked for particular religious or charitable or humanitarian use. So it is important to understand that regardless of whether the Akhunji Masjid existed on the registered properties with the Waqf board or not, it continued to be Waqf. And even whether or not it was Waqf in the technical sense of it,
the fact remains unchallenged that it was a property which had been bequeathed for use as worship place for the Muslim community and had been used as such for centuries down the timeline. കോടതികളുടെ തീർപ്പുകൾക്ക് കാത്തുനിൽക്കാതെ അധികാരിവർഗം എല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് തിട്ടൂരമിടുന്നു. ബുൾഡോസർ രാജുണ്ടാകുന്നു. അതോടെ ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ, അവരുടെ പ്രതീക്ഷകൾ, ഒരു ദേശത്തിന്റെ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ചരിത്രം, അതിൽ പിടിച്ച് വളർന്നു വരേണ്ട രാജ്യത്തിന്റെ മഹത്തായ ജനാധിപത്യം എല്ലാം വെറും ധൂളികളായി മണ്ണിൽ ചേരുന്നു. हम भी हमेशा कत्ल हुए और तुमने भी देखा दूर से, लेकिन we were always murdered and killed and you were a happy bystander from a distance. हम भी हमेशा कत्ल हुए और तुमने भी देखा दूर से, लेकिन ये न समझना हमको हुआ है जान का नुकसान तुमसे ज्यादा. But please do not think that I or we have suffered the loss of life more than what you have also. What does this mean? This means that whatever you are doing to the Muslim community today, by abuse of judicial process, by complete abuse of executive power, you think you are doing it to the Muslim community. You are actually hammering at the very infrastructure of the Constitution of India. So the Akhunji Masjid, the vandalization of Akhunji Masjid is not the vandalization and destruction of a Muslim piece of property. It is a sad curtain raiser for the destruction, for the vandalization of the constitutional premise that India was given and India was proud of. हम भी हमेशा कत्ल हुए और तुमने भी देखा दूर से, लेकिन ये न समझना हमको हुआ है जान का नुकसान तुमसे ज्यादा. ये न समझना हमको हुआ है जान का नुकसान तुमसे ज्यादा.